Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Aksa Salam from Government Graduate College for Women, Dubai Mahal Road, Bahawalpur. Today, our topic is Past and Present by Thomas Carlyle. I will discuss title and theme, what is historical background, and critical appreciation of past and present. Now we will go through these points one by one. First of all, I will tell you about title and theme. Past and Present is an outstanding work of prose by Thomas Carlyle that was published in 1843. He was a Scottish philosopher, writer, historian, and mathematician. It is essentially about 19th century industrial England and the clash between medieval and contemporary culture. It touches upon several other socio-economic themes as well, such as faith, religion, spirituality, working ethics, organized labor, aristocracy, and the structure of the modern society. Thomas Carlyle compares and contrasts medieval times with modern England. Carlyle is disappointed when the economic state and governance in England. The main conflict and themes deal with work, motivation, and poverty versus greed. Carlyle tells us about the current state of affairs in England. He discusses how the advent of industrialization and the departure from the church has led to greed by both the government and wealthy business owners. He presents the business owner as unsympathetic and callous towards the needs of the workers, so working class is continuously suffering. According to Carlyle, past was better as compared to current situation of England. He wants to throw light on materialistic dilemma between the poor and the rich. The rich are getting it all like a bright present and covering the poor with a dark cloud of future. His main focus is to figure out the main social dilemma that the society is facing. According to him, downfall of society is due to faulty economic policies and industrialization. Past and present consists of 4 parts. Book 1 is Prom. Book 2 is The Ancient Monk. Book 3 is The Modern Worker. And Book 4 is Horoscope. Now I come to historical background of this book. This book was written in the time of Queen Victoria. It was Victorian age that lasted from 1837 to 1901. Queen Victoria came to throne in 1837 and died in 1901. It is the longest reign in the history of England. It is also considered golden period of England. England was most powerful empire of the world. It was an era of colonization. England was ruling over other countries also. It was most advanced and developed country. During this era, industrial revolution took place. Factories were built, modern machines and technology was used. Queen Victoria herself was a beloved of English people, especially of middle class, because of her exemplary way of life and her moral and religious views. In spite of all this progress, England suffered from different problems. People flee from countryside and moved to towns in search of better jobs.
Population of towns increased, new towns grew up, demand for food, clothes, and shelter was increased. Way of working and way of living changed. As a result, England was divided into classes: rich Victorians and poor Victorians, and there was middle class as well. So different evils penetrated the society. Crime was accelerated, child labor was common, unemployment, poverty, greed, materialism and mammonism, departure of religion and belief in science. पास्ट एंड प्रेजेंट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने के लिए विक्टोरियन एज का जायजा लेना जरूरी है। ये किताब जिस दौर में लिखी गई इसे बरतानिया का सुनहरी दौर कहा जाता है। करीबन दुनिया की 1/3 आबादी पर इंग्लैंड की हुकूमत थी, मगर इसके साथ सोसाइटी में बहुत सी खराबियां भी पैदा हो गई थी। अमीर अमीरतर होते जा रहे थे और गरीब गरीबतर। माशी पॉलिसियों में कोई इस्तेहकाम नहीं था, नतीजतन जुर्म बढ़ गया। चाइल्ड लेबर के खिलाफ कोई कानून नहीं था। 5 साल की उम्र तक के बच्चों से इंतहाई सख्त काम लिया जाता और वर्किंग आवर्स 12 से 16 घंटे हुआ करते थे। ये 3 वजूहात की बिना पर था। ऑर्फनेज यानी यतीम खानों से बच्चों को आसानी से लिया जाता था और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता था। नंबर 2, they were cheaper than adults. इनको मुआवजा बहुत ही कम दिया जाता था as compared to grown up persons. Number 3, because of their small stature. उनकी छोटी जिसामत की वजह से उनसे वो काम लिए जाते थे जो अडल्ट नहीं कर सकते थे। मसलन चिमनी स्वीपर्स के तौर पर इन्हें रखा जाता था। चिमनी के अंदर ऊपर तक जाकर इसे साफ करते थे। चिमनी के अंदर इतनी तंग जगह होती है कि बड़ा आदमी अंदर नहीं जा सकता। And they were small enough to crawl under the machines to repair them and to tie the threads. मशीनों के नीचे क्रॉल करके यानी रेंग के जाते थे ताकि उनकी मुरम्मत कर सकें। और कपड़ा बनाने के लिए जो मशीन्स इस्तेमाल होती थी, इनमें थ्रेड यानी धागा टूट जाता था, उसे टाई करने के लिए भी इन्हें मशीन के नीचे जाना पड़ता था। बहुत से बच्चे कोल माइंस में काम करते थे जिनमें तंग टनल्स होती थी और सिर्फ बच्चे ही उनसे गुजर सकते थे। All these works were risky and dangerous, and both boys and girls were doing such works because they had to support their families. इसके बरक्स जो उम्रा के बच्चे थे उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल ही डिफरेंट था। वो बड़े बड़े घरों में रहते थे या बहुत अच्छे हॉस्टल्स में उनकी तालीम और तरबियत का जो है वो बंदोबस्त होता था और उनको मुआशरे के इन तक हकायक का जरा भी इल्म नहीं था। गुर्बत और बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। दूसरी तरफ लालच और मादा प्रस्ती इंतहा को पहुंची हुई थी। मेमोनिज्म की टर्म यूज की गई है। इट मीन्स टू वर्शिप वेल्थ, यानी कि इंसान दौलत का पुजारी बन चुका था। मजहब पस मंजर में चला गया था और सोसाइटी में मजहब का अमल दखल बहुत कम रह गया था। अब साइंस और दौलत ही की प्रस्तिश की जाती थी। अमीर और गरीब के लाइफस्टाइल में बहुत फर्क था। अमीर बड़े बड़े घरों में रहते थे और फैमिलीज इकट्ठी रहती थी और उनके घर एकर्स पर मुहित होते थे, जबकि गरीब लोग छोटे छोटे क्वार्टर्स में या छोटे छोटे घरों में रहते थे जो उनके लिए नाकाफी थे और सेपरेट फैमिलीज रहती थी। स्लम एरियाज में ये लोग रहते थे जहाँ पर बहुत ही बुरे हालात होते थे, जिसकी वजह से ये बीमारी का शिकार हो जाते थे और भूख और बीमारी बढ़ती जा रही थी। Charles Dickens gives his quotation about Victorian era that gives a clear picture of this age. He says, "It was the best of times, it was the worst of times. It was the age of wisdom, it was the age of foolishness. It was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity. It was the season of light,
It was a season of darkness. It was a spring of hope. It was a winter of despair. Thomas Carlyle completed this book in 7 weeks. He focuses on economic policies and industrialization and what was impact on people. He feared that individualism will be destroyed by mindless machines of industrialism. उसे ये डर था कि बेजान और बगैर दिमाग की जो ये मशीनें हैं जो इंसान ने खुद बनाई हैं वो उसकी इनफरादियत और शख्सियत को तबाह कर देंगी. Now I will give you overall analysis of past and present. Book 1 is Prom. It means introduction or preface, यानी कि तमहीद. It tells us about the condition of England at that time. It has 6 chapters and every chapter has a different name. Chapter number 1 is Midas. It is about King Midas, who was king of Phrygia, and this story is taken from Greek fables. King Midas बहुत ज़्यादा लालची था. उसने ख्वाहिश की कि वो जिस चीज़ को हाथ लगाए वो सोने की हो जाए. उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई. तो रिजल्ट क्या हुआ? He was unable to eat anything because whenever he put something in his mouth, it was converted into gold. So he died of hunger. So his wealth was enchanted and accursed wealth. In the same way, the wealth of England was enchanted and accursed because it was of no use for English people. इंग्लैंड की जो दौलत थी वो भी किंग मिडास की दौलत की तरह ही थी. इसको enchanted and accursed कहा गया है क्योंकि ये सोसाइटी के किसी काम की नहीं थी और इससे सोसाइटी में कोई रिफॉर्म नहीं आ रहा था. सेकेंड चैप्टर इज सफिंक्स. सफिंक्स की पहेलियां बहुत मशहूर थी लेकिन इन पहेलियों या रिडल्स को वही जवाब दे सकता था जो वाइस होता था. तो इंग्लैंड की हालत का सामना भी वही कर सकता था जो कि पावरफुल था और गरीब लोगों में इन हालात का सामना करने की ताकत नहीं थी. थर्ड चैप्टर इज मैनचेस्टर इंसरेक्शंस. इस चैप्टर में बताया गया है कि बहुत से लोग मैनचेस्टर में इकट्ठे हो गए और वो अपने हकूक का मुतालबा कर रहे थे. They were protesting against cruel laws and they were asking for their rights. The slogan of people at the time of revolt was a fair day's wages for a fair day's work. अब उनको उनके हुकूक को क्या ही मिलते, उल्टा उनको तशद्दुद का सामना करना पड़ा और बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे. Fourth chapter is Morrison's pill. James Morrison was a famous druggist of the 19th century. His vegetable pills became very famous and were sold in a large number to people suffering from different diseases. So Carlyle wishes for such pill to cure social malady of England. Carlyle ऐसी दवाई की ख्वाहिश रखता है जिसमें हर बीमारी का इलाज हो और जो इंग्लैंड की तमाम बुराइयों का और तमाम जो है बीमारियों का खात्मा कर दे. फिफ्थ चैप्टर इज अरिस्टोक्रेसी ऑफ टैलेंट, यानी जिसमें टैलेंट है उसी को सामने आना चाहिए. इसके अलावा इसमें यह बताया गया है कि नेचर के लॉस हैं जिन्हें फॉलो करना जरूरी है. अगर हम इनको फॉलो नहीं करेंगे और अपने लॉस बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ेगा. सिक्स्थ चैप्टर इज हीरो वर्शिप. इसमें ये बताया गया है कि हर इंसान का एक हीरो होता है और इंसान उसको वर्शिप करना शुरू कर देता है और पीपल जो है वो हीरोज को आइडलाइज करते हैं. तो वो ये चाहता है कि लोग खुद अपने अंदर रिफॉर्म्स क्यों नहीं लेकर आते, अपनी शख्सियत को बेहतर बना और वो खुद हीरोज बन जाए बजाय इसके कि वो दूसरों को आइडियलाइज करें. सेकेंड बुक इज द एंशिएंट मंक. अब इसमें कुछ हिस्ट्री के वाक़यात का जिक्र किया गया है और इंग्लैंड की जो सिचुएशन थी उस पर नजर डाली गई है.
First chapter is Jocelyn of Brooklyn. He was a monk and author and he wrote chronicles. और इन्हीं chronicles को कार्लाइल ने जो है वो अपने इस बुक में जो है वो पेश किया है. Second chapter is Saint Edmundsbury. इसमें बताया गया है कि 7 सदियां गुजर गईं लेकिन जमीन को उसका हीरो अभी भी नहीं मिला. Third is Landlord Edmund. He was famous for his justice. और कार्लाइल चाहता है कि ऐसे लोग बार बार क्यों पैदा नहीं होते. Fourth chapter is Abbot Shugo. He was a monk and he was a greedy person. अब उसके लालच के बारे में इसमें बताया गया है. Fifth chapter is 12th century. इस सदी में कई लोग आए और चले गए. अभी बहुत से लोगों ने आना है लेकिन गरीब वैसे ही हैं और मुसलसल जो है वो गरीब इस्तेसाल का शिकार हैं and they are suffering. Sixth chapter is Monk Samson. He was a religious person. वो ख्वाब देखता है कि चर्च में शैतानी ताकतों ने हमला कर दिया है. वो अपना ख्वाब जो अपनी माँ को सुनाता है, माँ उसे चर्च ले जाती है और वहीं छोड़कर आती है ताकि एक मजहबी माहौल में उसकी परवरिश हो सके. इसमें वो ये भी बताता है कि तब्दीली वही लाता है जिसके अंदर जज्बा हो. 7th chapter is the canvassing, यानी कि लोगों की राय लेना. इसमें बताया जा रहा है कि वोट लिए जा रहे हैं ताकि चर्च के सरबराह का इंतखाब हो सके. 8th chapter is the election. अब इसमें हेड को चूज करने के लिए इलेक्शन जो है वो दिखाया गया है और इंसान अपनी सोच के मुताबिक और अपनी जो है वो ज़हनियत के मुताबिक ही वोट देता है. 9th chapter is Abbot Samson. इससे बताया गया है कि हेड को चुन लिया गया है लेकिन उसको बादशाह ने चुना है, लोगों ने नहीं. यानी कि हमेशा ताकत की ही आवाज होती है और ताकत की आवाज ही सुनी जाती है और गरीब की कोई आवाज नहीं होती. 10th chapter is government. इस चैप्टर में बताया गया है कि हेड हर चीज को बेहतर और ठीक करने में लगा हुआ है लेकिन मंक्स जो है वो उसके खिलाफ हो जाते हैं और उसकी राह में रुकावटें डालते हैं. 11th chapter is the abbot's ways. लोग जो है वो सैमसन को अच्छा नहीं समझते लेकिन जिसकी परवरिश चर्च ने की हो तो वो कैसे अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें रिलीजन के बारे में जो है वो बताया गया है और इसमें ये बताया गया है कि हर इंसान की आवाज को सुना जाता है मगर उसके लिए हिम्मत होनी चाहिए. और एबर्ट को बहुत सारे ट्रबल्स का सामना है, उसे काम करने के लिए अच्छे इंसानों की जरूरत है लेकिन मंक जो है उसके राह में रुकावटें डाल रहे हैं. 12th chapter is in parliament. एबर्ट सैमसन अपने आप को एक अच्छा इंसान साबित करने में कामयाब हो जाते हैं और हमेशा जस्टिस और ब्रेवरी से काम लेते हैं. 13th is Henry of Essex. इसमें बताया गया है कि बुरे लोग इंग्लैंड को बर्बाद करने की कोशिश में लगे हुए हैं. 14th chapter is Practical and Devotional. इसमें यह बताया गया है कि सैमसन जैसा इंसान ही दुनिया को पीसफुल बना सकता है. 15th and the last chapter is Saint Edmund and the Beginnings. इसमें यह बताया गया है कि एबर्ट सैमसन जैसा इंसान अगर आज के दौर में होता तो उसे गायब कर दिया जाता और उसे अपना काम ना करने दिया जाता. Third book is The Modern Worker. The first chapter of this book is Phenomena. इसमें मौजूदा हालात के बारे में बताया गया है कि क्रिश्चियनिटी यानी कि मजहब सोसाइटी से खत्म हो गया है और मजहब की तरफ कोई ध्यान नहीं देता. Second is Gospel of Mormonism. It is a biblical term. यानी कि मॉडर्न सोसाइटी की एक ही आवाज है, कैश एंड पेमेंट, और सोसाइटी जो है वो दौलत की ही पूजा में लगी हुई है. Number 3 is Gospel of Dilettantism. इसमें सुपरफिशियल बिलीव्स के बारे में बताया गया है और स्पेशली जो एरिस्टोक्रेट्स हैं उनके बिलीव्स सुपरफिशियल होते हैं. Number 4 is happy. Men are wrong in claiming to be happy. यानी कि दौलत के नशे में खुश रहना कोई खुशी नहीं.
Number 5 is the English, यानी कि इंग्लिश पीपल को अपनी आवाज बुलंद करनी नहीं आती और वो अपनी आवाजों में स्टूपिड ख्याल किए जाते हैं। नंबर 6, 2 centuries, मजहब नाम की चीज खत्म हो गई है और बिलीव सिर्फ पैसे पर है। नंबर 7, ओवर प्रोडक्शन, इसमें ये बताया गया है कि पैदावार तो मजदूर करता है लेकिन सारा पैसा जो है वो मालिक ले जाता है जो कि ओनर होता है। नंबर 8, अनवर्किंग एरिस्टोक्रेसी, अमीर लोग सारा पैसा कमा रहे हैं बगैर काम के क्योंकि पैसे पर हुकूमत अमीरों की है। नंबर 9, वर्किंग एरिस्टोक्रेसी, गरीब लोग काम करते हैं और अमीर लोगों का एक ही काम है यानी कि वो पैसा जो है वो अपनी जेबों में डालते हैं। नंबर 10 is Pluxon of Undershot. It is about captain of industry. इसमें ये बताया गया है लव फॉर मनी जो है वो मोरल वैल्यूज को खत्म कर देता है। नंबर 11, लेबर, मजदूर अपने आप को भूल कर काम में मगन है मगर उन्हें काम से कोई फायदा नहीं हो रहा। नंबर 12, रिवॉर्ड, मजदूर तबका जो काम ईमानदारी से कर रहा है अगर इस दुनिया में उसको फल नहीं मिलता तो अगले जहान में रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। 13 इज डेमोक्रेसी, इसमें यह बताया गया है कि डेमोक्रेसी की वजह से मजहब से यकीन उठ गया है। नंबर 14 इज सर जैबिश विंडबैक, it is about Oliver Cromwell and he was hanged because of his views. उसको उसके ख्यालात की वजह से जो है वो सजा मिली। नंबर 15 इज मॉरिसन अगेन, इसमें ये बताया गया है कि अब इंग्लैंड को कोई और रिलीजन नहीं दिया जाएगा, जो मजहब है उसी पर अमल करना होगा और यही जो है वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। फोर्थ बुक इज हॉरोस्कोप, इट मींस टू प्रेडिक्ट फ्यूचर, कैसे फ्यूचर में इन मसाइल से निकला जा सकता है। चैप्टर नंबर 1 इज एरिस्टोक्रेसीज, एरिस्टोक्रेसीज और प्रीस्टहुड हमेशा ही रहे हैं और जो है वो कार्लाइल का ख्याल है कि ये इंसान की तरक्की की राह में रुकावट है, अगर इंसान को कामयाब होना है तो इन्हें छोड़ना होगा। नंबर 2 इज ब्राइबरी कमेटी, इलेक्शन शुड बी फ्री फ्रॉम ब्राइबरी, यानी कि इलेक्शन जो है वो जस्ट होने चाहिए, फेयर होने चाहिए। नंबर 3 इज द वन इंस्टीट्यूशन, इसमें सोल्जर्स के बारे में बताया गया है कि सोल्जर्स का काम है कि वो दुश्मन मुल्क के साथ लड़ाई करें, लेकिन वो कहता है कि सोल्जर्स का काम होना चाहिए कि वो फॉल्सहुड और जो बैड थिंग्स हैं सोसाइटी में उनके खिलाफ लड़ाई करें। नंबर 4 इज कैप्टन ऑफ इंडस्ट्री, इस चैप्टर में ये डिस्कस किया गया है कि गरीब के मसले को गरीब ही समझेगा और गरीब को ही कैप्टन बनना होगा। कोई अमीर अगर गरीब के लिए आवाज उठाएगा तो उसमें वो चीज या वो बात नहीं होगी या वो जज्बा नहीं होगा, क्योंकि गरीब के मसले को सिर्फ गरीब ही समझ सकता है। नंबर 5 इज परमानेंस, जबरी हुकूमतों को खत्म करना होगा। नंबर 6 इज लैंडेड, इसमें ये कहा गया है कि मजदूर को परमानेंट सैलरी दी जानी चाहिए ताकि उसके मसाइल हल हो सके। नंबर 7 is the gifted, people with nobleness are gifted from heavens, अच्छे काम करने में अल्लाह की तरफ से ही फल मिलता है। नंबर 8 and the last chapter is didactic, इसमें ये बताया गया है कि पैसा इज्जत नहीं देता बल्कि पैसे से लोग दुश्मन बनते हैं और पैसे से कोई ऑनर इंसान हासिल नहीं कर सकता। एक मैंने आपको ग्लिम्स दी है इस पूरी बुक की कि ओवरऑल इसमें क्या कुछ डिस्कस किया गया है। उम्मीद है कि ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर प्रिपेयरिंग योर लॉन्ग क्वेश्चंस। थैंक यू गर्ल्स।